Hello everyone. I would like to talk about what are the treatment options for obesity. I'm Dr. Vikas Singhal, a senior consultant department of GI and bariatric surgery at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon. So as we know that obesity मोटापा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. पिछले 3 दशक में ओबेसिटी सारी दुनिया में और उसी तरीके से भारत में कई गुना बढ़ गई है. Right now in India we have more than 5 crore people who are suffering from obesity. So we understand now that obesity is not just a lifestyle problem, but it has been classified as a disease. The World Health Organization is strongly emphasized that obesity is a disease, it should be evaluated like a disease and it should be treated like a disease. अगर मैं आपको इसको सरल तरीके से समझाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ ज़्यादा खाने से किसी का वज़न बढ़ता है. कई बार एक परिवार में 2 भाई होते हैं, एक का वज़न बढ़ता नहीं है, दूसरे का वज़न घटता नहीं है. दोनों एक ही जीन्स होते हैं, दोनों एक ही खाना खाते हैं. सो it is a very complex mechanism of obesity. It is not so simple, so it needs to be evaluated. जब हमारे पास ओबेसिटी के पेशेंट्स आते हैं, हम पहले देखते हैं कि कोई ऐसा कारण तो नहीं है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, कुछ और कोई ऐसी दवाइयों पे तो नहीं है जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है. सो द फर्स्ट स्टेप in treating obesity is evaluating it and making sure that there are no such causes that are leading to the weight gain or causing the obesity, or what we should say are modifiable causes. Then we start looking at the common reasons. One of the most common reasons for obesity is not having the correct diet. So all our patients get evaluated by the dietitian, because अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है then it is very difficult to fight obesity, whether the diet is not correct, as in the portion size is not correct, or whether what we are eating, the quality of food is not right. So our dietitians do a thorough evaluation and see where the dietary changes can be brought about. The stepping stones in the treatment of obesity are diet correction and a baseline level of exercise. Then there are several options for treating obesity in a stepwise manner that I would like to discuss. So there are medication that we have available. कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि 5 से 10 kg वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं. कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं. The important thing about medication is that there can be some side effects. So all the medications need to be administered under a closely monitored program or an obesity treatment program, where the patients have already done the diet change, already started some exercise, and the next step we add on the medication. Simultaneously we monitor the blood tests, we make sure that they're not having any downsides or any complications from the medication. Typically, if the medications are benefiting or helping with the weight reduction, then we may continue them for a few months. Then if somebody's weight is excessive, say more than 20 to 30 kg excess weight for their height, say for example अगर किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच है, उनका आइडियल वेट 65 से 70 किलो होना चाहिए, पर वेट है 90 से 100 किलो, जो कि 20 से 30 केजी एक्सेस है. तो उनमें ऑफ कोर्स डाइट और एक्सरसाइज चेंज तो हम रेकमेंड करेंगे ही, मेडिकेशन भी हो सकता है हम ट्राई करें. बट जब वेट बहुत एक्सेस हो जाता है, 20 टू 30 केजी एक्सेस हो जाता है, तब फिर हम एंडोस्कोपिक ऑप्शंस या फिर बेरियाट्रिक सर्जरी कंसिडर करना शुरू करते हैं. क्योंकि किसी के लिए भी 30-35 केजी वेट रिड्यूस करके उसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. स्पेशली अगर वेट की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो गई, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल,
जॉइंट प्रॉब्लम्स कि अर्ली ऑनसेट आर्थराइटिस हो गया, नीज़ में दर्द शुरू हो गया। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे स्लीप एपनिया कि खराटे बहुत ज़्यादा आना, रात को नींद खुल जाना, दिन में थकान रहना, लेडीज़ में इनफर्टिलिटी। सो ये ओबेसिटी हेड्स से टो तक बॉडी को अफेक्ट करती है और कई सारे ओबेसिटी की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम वेट के साथ जुड़ी हुई होनी शुरू हो रही है, then we would recommend that bariatric surgery be considered earlier than later. So typically for body mass index or BMI 35 with associated problems, we would recommend bariatric surgery where we change the intake of food. We may also change the absorption of food. It's a GI surgery, a gastrointestinal surgery, where either the stomach is made smaller or the intestine is bypassed. There are several metabolic changes where the body's metabolism improves, and the surgery gradually leads to about 60 to 70% reduction of the excess weight. जो extra weight होता है उसका 60 से 70% weight gradually over time कम हो जाता है. So what I would like to say in summary is that obesity should be considered a disease. It needs to be evaluated like a disease, and it should be treated like a disease because there are several treatment options. The option needs to be individualized to the patient. Everybody needs diet and exercise counseling, but then based upon the individual profile of the patient, what is their BMI, if they're suffering from other medical problems because of the obesity, then we may need to consider either a medication or endoscopic treatment options or bariatric surgery. So yes, get help. There is plenty of options available. Thank you.